Hi everyone, a very good evening, and it is a request to all of you as you have to start with your videos and definitely be on mute. So I request everyone to start with your videos. This is Mrs. India Batch D training session for today. We have a beautiful set of trainers. We have Shelza Suri, who's the head groomer and your show choreographer for season 2. We have Sakshi Shekhar, who will be taking care of all your nutrition and diet part. Then we have Rupali Jalota, who will be taking care of your ramp walk. How to ace that ramp walk, you have to follow Rupali and definitely the other trainers now. So talking about this training session, I would like to have an idea. किसको पता है that what is going to happen in talent round 1, 2 and 3? If you have any idea, just raise your hand. Vivo, okay. So Vivo ji, you can start, but I have a request. मैंने आपको first session में बताया था, you all have to come up with your names. I can't call someone Vivo, right? Yes. Actually, hi, good evening. So today, actually, what happened? I just suddenly joined, and my mobile name is appearing. So I Your couldn't name? say Dipti Rekha Patne. Okay, Deepti ji, I'll change your name and just tell us what is there in talent round 1, 2 and 3. I just know that first round. That is your first role model. Actually, last time you said that you have to speak within 1 minute your role model, and you have to say something about that, about your role model, and you have to do the ramp work. That is the first round. I know. Yes, that is totally correct, Deepti ji. And this is for everyone. Again, it's a request to be, on the screen because the trainers are observing you, not just for your talent round, but for the training sessions also, you will be observed. So make sure your videos are on and you're sitting somewhere very comfortably, not roaming around. And yes. So talent round 1, 2 and 3 की जहां हम बात करते हैं, रैम्प वॉक इज द मस्ट पार्ट. आपको सब लोगों को अभी तक पता चल गया है कि रैम्प वॉक आपको तीनों राउंड्स में करनी है. रेज योर हैंड, कौन लोग हैं जो अभी तक अपनी हील्स के साथ में कंफर्टेबल हो गए हैं? ओके, आई लाइक दैट. There are a lot of women. Okay, so you all are practicing. Is that so? There are some who are practicing, so that's great. So ramp walk के basis पे आपको जज किया जाएगा आपके तीनों राउंड्स में. हर राउंड के बाद में आपको जो फीडबैक मिलते हैं जूरी से, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज ये फीडबैक आपको राउंड 2 एंड 3 में बहुत हेल्प करेंगे. राउंड 1 में आपको रैम्प वॉक के साथ में अपने आइडल के बारे में बताना है और आइडल से आप क्या आप उस आइडल को इंस्पिरेशन क्यों मानते हैं, आपको ये बताना है. वो कैसे आपको कनेक्ट करना है, आपको उनकी खूबियों के बारे में नहीं बताना बिकॉज आई अंडरस्टैंड डेफिनेटली आपके जो आइडल्स होंगे वो ऑलरेडी नोन होंगे बहुत सारे लोगों के. सो सेलिब्रिटीज के जो खूबियां हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट आप उनसे किस वे में कनेक्ट करते हैं, आपको उस चीज का ध्यान रखना है. आपको अपना डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं देना बिकॉज एक टाइम लिमिट है 60 सेकेंड्स का. उसके अंदर आपको टोटल ये नहीं बता देना है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ये सबको बताइए. ऑडिशन में आप सब हमें बता चुके हैं, राइट? So if I say hi, I'm Jaya, my idol is Priyanka Chopra and I connect with her in this way and then I start with my walk. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि पहले आप रैम्प वॉक करते हैं या फिर आप अपने आइडल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. उससे ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है. सो आर वी ऑल क्लियर विद दैट? थैंक यू. सो इन टैलेंट राउंड 2 जो आइडल आपने बताया है उस आइडल को किसी फॉर्म में आप डिपिक्ट करेंगे. वो अब आप पे डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप किस तरीके से उसको डिपिक्ट करते हैं राउंड 2 के अंदर. राउंड 3 इज ऑल अबाउट दैट ग्लैमरस लुक. So you all have to be the showstopper of your show of talent round 3. So you will be performing your ramp walk with your best hairstyle, best outfit, and definitely music is the must part because बहुत सारे talent rounds में अभी तक मैंने देखा है कि music added नहीं है. म्यूजिक के भी मार्क्स है. जूरी कैसे आपको रिव्यू करेगी विदाउट म्यूजिक? उनको क्या आइडिया लगेगा कि आप किस टाइप की वॉक कर रहे हो, किस बीट्स पे आप वॉक कर रहे हो. सो यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल कि आप म्यूजिक डेफिनेटली ऑन करें एंड म्यूजिक जो है वो सुनाई दे बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू द अदर पर्सन. आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो डू यू सी मी ऑन स्क्रीन एंड आपको उस एनर्जी से ही मेरी आवाज समझ आ रही है, आप वो एनर्जी अपने पास में लेके. अब मैं ऐसे बात करूंगी,
कि आपको टैलेंट राउंड 1 2 3 में ये करना है, you won't like it, right? So you have to show that same energy on off the screen, ठीक है, sorry, on the screen, ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाए. So these are the very basic details जो आपको राउंड 1 2 and 3 में हेल्प करेगी. एंड द फ्रेमिंग पार्ट डेफिनेटली, कि आपका फ्रेम किस तरीके से सेट है. So उसके ऊपर भी आप भी आगे काफी गाइडेंस मिलने वाली है. So without wasting any further time, let's invite our head groomer to give you some guidance about the virtual presence and that confidence. Over to you, Shelza. Yeah, so a very, very pleasant good evening to all the beautiful faces that I am seeing across the screen. You all are looking so lovely. And as Jaya was giving all of you the tips, I was trying to see how have you screened yourself, and I can see that you are already turning yourself into celebrity frames. So congratulations there. And I see that Urvashi, Sunana, Akanksha, iPhone, Shilpa, Deepshika 347 and Renu Kumari has not switched on the videos. I would request you also to please switch it on, because it makes me feel good that I'm visible and audible to everybody. It is a little incomplete to hear someone, the questions, but not being able to see them. So it's my humble request, unless you don't have any dire straits, I would want to see all of you sitting very beautifully framed in my laptop. So let's get started today. You all know me by now. I'm the head groomer for FSIA for this season and the show choreographer. And I will be majorly talking to you today about how can you improve yourself through this pageant journey. It is very important. Firstly, let me compliment you that you've chosen such a good platform, that is Forever Star India platform, to, give wings to your aspirations and your dreams. But जहां आपने अगर पकवान मीठा बनाना हो तो उसकी तैयारी भी हमको उतनी ही अच्छी करनी पड़ती है. Do you agree? So today I am going to talk about 3 important things जो आपकी जर्नी को और मीनिंगफुल, कॉम्पिटिटिव, accomplishing बनाएगा. So let's get started with talking about your virtual presence. जैसा कि आपको जया ने ऑलरेडी बहुत बार बताया है, मैंने भी सुना है बताते हुए, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करती हैं कि वर्चुअल प्रेजेंस आपकी कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सिटी लेवल तक का जो आपका जर्नी है वो वर्चुअल होने वाला है, राइट? सो वर्चुअल आपकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए. फर्स्टली, what are the things that you need to look into, if you're talking about the virtual presence, the virtual frame through which we are all looking at you and you are looking outwardly? What is that and how is it so important? So I would first like to compliment some people who are sitting very nicely. और जब मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट करूं तो इसलिए कर रही हूं ताकि जो बाकी हैं वो देखें कि मैंने क्या उनमें ये नोटिस किया और क्या अच्छी बात थी, और उसको आप कॉम्प्लीमेंट. जैसे मोस्ट ऑफ यू आर सिटिंग, जैसे रुचि हैं, शाजिया जी हैं, नम्रता है, रेणुका, आप बहुत क्लोज हैं, आपका सिर कट रहा है तो थोड़ा आपको पीछे जाके बैठना है, ठीक है? और जैसे उर्वशी जी हैं, आप भी थोड़ा सा पीछे जा सकती हैं. और वीरा हायर, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन लिफ्ट योर फोन अ लिटिल अप or your laptop up, whereby I get to see your torso, not your knees, because abhi focus is mostly on your knees, and I would appreciate if I can see more of your face, because I want to see your expressions. I want to see how well are you responding to me. Thank you so much. And Ankita, aap bhi thoda sa piche ja sakte hain. Anamika is sitting well. Anamika, I would request you the same thing, कि आपने जो आपका लैपटॉप है या फोन है अपने एंगल से थोड़ा नीचे रखा हुआ है, उसको थोड़ा ऊपर रखिए. Whatever your gadget is, whether it's a laptop or it's a phone, it has to be at the level at which you're sitting. So ideal place to sit is on a table, whereby you put something and the level remains the same. Okay, it can be a dining table, it can be a study table, it can be a teapot table, but make sure that's sitting at a good angle. Similarly, I would request Deepika ji also, उन्होंने ऊपर रखा हुआ अपना laptop, right? Camera ऊपर है, आप नीचे हैं. I would request you next time, please make it at the same angle, because जब आप कैमरा ऊपर या नीचे रखते हैं, आपका face distort हो जाता है. ठीक है? कैसे डिस्टॉर्ट होता है अब मैं आपको बताती हूँ. अगर मैंने अपना जैसे टेबल से उठा लिया फेस और मैंने ऐसे किया, आप देखिए मेरा नीचे वाला फेस चौड़ा लग रहा है, मेरा माथा नैरो हो गया है, फेस वाइड हो गया. Are you noticing? Now if I put this down,
My face is again distorted. Do you see? You are seeing more of my neck, my lower part of my jaw, but you are not able to appreciate my face. Yeah. So I have done this exercise only to make you understand that why it is important that you put your phone, your laptops at the same level. आप सबका backdrop बहुत अच्छा है. I'm very happy. Kudos to that. ठीक है, सीमा जी का बिल्कुल clear backdrop है. It's all green. I would request you to put your name later. 7DG26B. आपका भी backdrop बहुत clean है. विभूति जी का भी बहुत clean है. All of you are sitting with very nice, clean, undistracted backdrops. Okay, now let's talk about your sitting position. So your sitting position has to be very, very energetic. Okay, shoulders back. Okay, all of you are sitting beautifully well. कोई slouch नहीं कर रहा है और आप बहुत अच्छे से बैठे हैं. आपका जो styling है, how are you sitting? Like I'm sitting formally, okay? Similarly, you have to dress up nicely and come in front of the screen, which also you all are doing, which is so good. I'm so happy. Now, the other thing is your makeup, okay? So I do see that all of you are sitting with nice makeup. Okay, all this makes a huge difference. There are days when we have tired eyes, puffy eyes, we work day long, or generally we are feeling under the weather. But when you put on the makeup, it just not makes you look pretty on the outside, but on the inside also, आपके अंदर थोड़ी energy आ जाती है. So the must do for you is makeup. I don't say कि आप पूरा full on makeup करके बैठे. Just a little BB cream, a little gloss on your lips, a little mascara in your eyes, and a nice hairstyle, whereby we can appreciate your appearance. Don't cover your face with flicks on the half side. Like say, mere bhi baal hai, I've pinned it so that you can clearly see what I am trying to convey through my face and my expressions, right? So your hairstyle has to be nicely dressed. It can be a messy bun, it can be a low bun, it can be loose hair, but please don't let the flicks take away the beauty from your face, because we appreciate faces with full expressions on. Right? So if you're able to understand, keep giving me thumbs up so that I'll keep speaking to you. नहीं तो मुझे लगता है पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ आ रही है कि नहीं. So just give me a thumbs up if you like it, okay? Thank you. Thank you. Now the other thing is accessorize. थोड़ा सा accessorize कीजिए. जैसे कि शाजिया जी झुमके पहन के बैठे हैं, उनके साथ अच्छा लग रहा है. Nahida has got a beautiful face, but Nahida, if she's wearing something in her ears, I'm not able to see it because her hairstyle is such. So what you can do is, Nahida, you can put one side, one hair on at the back and one in front like this. So this way you can show off your accessories, yet you can maintain your style. Take the flick away from your face. Beautiful, like that. And if you're fond of keeping your hair open, what you can do is run the hair aside and then just put a little spray so that पंखे की आवाज से या आपके सिर हिलाने से वो बाल वापस मुंह पर नहीं आते, yet the bounciness stays. Okay, and I would appreciate Renu ji, आपकी smile बहुत अच्छी है. It's very heartening to see people smiling, when they are being spoken to. So keep that spirit on. Namrita Vyas, you're very pretty, but you're sitting very far away, sweetheart. Your knee is more prominent than your face. So when you have a face as pretty as you should be putting more focus on your face. And your makeup is looking lovely. You've done good makeup. I'm very happy with the way you've turned out. Okay, Veera ji, I would request if you can sit straight rather than sitting sideways. क्योंकि जब हम sideways ऐसे करके बैठते हैं, all the focus comes on the arm, and arm is not the place where you want the focus to be on. Okay, so try and sit straight. Try to sit at an angle. अगर आपको लगता है that your chest heavy or your arms are heavy and you feel conscious sitting flat straight up, then you can always tilt and sit like this a little, but certainly not like this. All right, so these are some virtual tricks that I'm sharing with you so that all of you, should evolve. With every new frame that you visit us, you should be turning yourself into divas, because glamour quotient FSIA ka bahut important hai. All of you are participating in a platform which is so full of light, camera, glossy nights, gala events. So you should also feel like that. And how would you feel like that? Only when you dress like that.
Okay, I don't say that you sit in gowns every day. You can be sitting in your other formals, but sit in a very chirpy, fresh, bright, approachable, absorbable position, right? So these are some tips that I wanted to give you for your virtual presence. कि जब आप आए, क्योंकि हम जितने भी आपके mentors हैं, organizers हैं, हम सब आपको through the screen देखते हैं, और आपका जो अभी का make or break प्रेजेंस है वो बहुत मैटर करता है. अभी आप किस तरह हमसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह आप हमारी बातें अब्सॉर्ब करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, इन्हीं के थ्रू हम आपकी जो है मार्किंग स्कीम तैयार करते हैं. सो प्लीज give your best foot forward in this competition, and you will see that you have walked many steps, surer steps ahead, as you will take these smaller ones with us. Okay, so anyone has any questions for virtual presence? Quickly, just raise your hand. I will take only 2 questions if there are any. And I'm so happy कि किसी के कोई questions नहीं है. That means मैंने अच्छे से explain कर दिया. Well, thank you. Let's move on to the next topic, and that is how can you improve your self-confidence? Now, self-confidence सबसे बड़ी accessory होती है हमारी जिंदगी में. ना आपकी बिंदी, ना आपके झुमके, ना आपके कंगन, ना आपकी स्मार्ट वॉचेस, ना आपके डिजाइनर क्लोथ्स. जो सबसे बड़ी एक्सेसरी हम सब के अंदर होती है, जो इनबिल्ट भगवान ने दी है, जिसको हमें ब्रश अप करना पड़ता है, वो होती है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस. हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अंदर से कौन है, क्या हम ये जानते हैं? हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है यही सोचते हुए कि मेरी मासी सोचती है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है, मेरी मम्मा कहती है कि मैं तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ, मेरे पापा को लगता है कि मैं एकेडमिशियन बहुत अच्छी हूँ. लेकिन आपको क्या लगता है? कभी आपने इसके बारे में तवज्जो दी? कभी आपने इसके बारे में सोचा? अगर आपने सोचा तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो हम अपने बारे में धारणा बनाते हैं, what we think about ourselves is what we actually turn out to become. And if we start foraying, or if we start believing in what others think that we are, we end up being confused. We end up being boxed. And FSIA is that platform which gives you an opportunity to think about yourself, not through the eyes of your parents, your siblings, your spouses, your friends. Okay? It gives you an opportunity to think about yourself. So today, all of you, once you get free, you are going to write down 5 things that you think you have in you which are very good. Okay? And please work on your strengths. If you think that you have a beautiful figure, you must flaunt it. If you think that you have good communication skills, please flaunt it. If you think that you are very good with PR skills, please flaunt it. Work on it. Let that become a weapon for you. Okay? And simultaneously, you should also know the areas for work. Wherever you need to work, start working on it. It might take a little longer, but only if you start to work on it will there'll be a change. So how can you improve your confidence? By outwardly taking care of yourself in terms of how do you maintain yourself. Inwardly, by being connected to yourself through self-talk, self-motivation. Okay, doing things that make you happy. And then speaking about it, conveying it. How do you convey? You have such a good portal called multimedia these days. You have FSIA's Podium. So if you're going through a motivational journey for yourself, make those videos and post it on FSIA. Post it. Let us see, what are you doing? What hard work are you doing? If you're trying to lose weight, put it on. If you're putting on a healthy diet, put it on. If you're being motivated through some other gadget, some other means, some other training, put it on. We would like to see it. Okay? But you should be woke. आपने वो टर्न पढ़ा, hashtag be woke. WOKE. How many of you know it? Be woke. No? This is your task today. Be woke. Tell me through your postings on FSIA's page, what is be woke? This is everybody's task today. And be that. This is what I want you to do. Be woke. Okay? Now the other thing is, the last and the most important thing is, how can you turn yourself into winners? How can you become achievers in life? There are 3 simple rules. First, be open to learning.
आज शैलजा मैम आई हैं, उन्होंने आपसे कुछ कहा, मेरे बाद साक्षी मैम आएंगी, वो आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगी, उसके बाद रूपाली जी आएंगी, वो कुछ अच्छा बोलेंगी, राइट? उन सब से आपने सीखना है। जया मैम आपसे जो टिप्स शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, उसको ग्रास्प कीजिए और उसके मुताबिक अपना कंपटीशन में तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर फॉर्मेट के हिसाब से आप अच्छा काम करते हैं तो फॉर्मेट के हिसाब से नंबर भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप फॉर्मेट के बाहर अच्छा काम करेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, फॉर्मेट के अंदर करेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। सो जो जया जी आपको टिप्स देती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज टेक इट, understand it, and do everything in that frame. Okay, so be aware and be open to learning. What I'm trying to tell you is grasp everything good from every nook and corner in your life. Motivation can be sought from your pet, from the plants, from nature, from strangers, from kids, from parents, from spouses, surprisingly. But you can seek your inspiration from anyone. So be that sponge who wants to learn, be an eager learner. You will see how you are going to transform yourself from good to becoming better, to becoming the best version of yourself. Second is be consistent in all that you're doing. आज आप मोटिवेट हुए, आज आपने कुछ किया, कल उससे मोटिवेशन कम हो गया, थोड़ा किया, तीसरा दिन बंद हो गया। नो, आप एक समतल भाव से काम कीजिए, ठीक है? हम ये नहीं कहते कि आप 90% पे आइए और उसको मैच कीजिए। इट्स डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट बी एवरेजली 75%. But don't be 90% on one day, 70 on one day, and then 20 on the other day. Be consistent. Consistency is the key to success. And lastly, and most importantly, be healthily competitive. All of you have coming to this FSIS podium from different walks of life, different phases of life, different age groups, different home sets, different mindsets. So I'm sure there is so much to learn from each other. Appreciate the good in others. Try to imbibe those good into you. Okay, you can only do that if you are open to learning. So be open to learning, be competitive, and be consistent. And if you have these three things in you, I am telling you today, nobody can stop you in your winning race. So this is Shelza Suri for all of you. I'll always be motivating you forever. If you need any kind of support, Jaya ko aap baat kijiye. Jaya will guide me through, and I'm always available for you. Okay, now I hand over back to Jaya, and God bless you and give your 100%. That is all that we want from you. Thank you. Thank you so much, Shelza. And I think it is really motivating for a lot of women. They all have, had the idea कि किस तरीके से अब आना है उनको आगे screens पे. So thank you so much for being here and guiding them. Let's hear from our next trainer, the Magic Platter, who is going to give you the guidance in your platter. What are you going to have? So Sakshi, over to you. Thank you so much, Jaya. And not only for the participants, Shelza is always a guiding light for all of us, I'd say. True mentor by all her heart and soul. My name is Sakshi Shekhar, and I will be your nutrition expert, your guide on board Forever Star India flight to success. Isn't it? You all are seeing yourself in the finale, right? अपने आप को आप देख रहे हो ना उस फाइनल सबसे बड़े वाले क्राउन के साथ. मुझे देखना पड़ेगा. All of you smiling and confident. Very nice. Wow. So this crown that you are going to achieve has to be a work of art and hard work that you're going to do. आपने अपने inner soul को refresh तो कर लिया शैलजा के साथ. अब बारी है आपके gut की. आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, and how will you conduct yourself in terms of food so that जो आपका final day आता है, जो finale आती है, उसमें आपका endurance, stamina और आपकी जो natural glow है वो कैसे काम करेगी, right? So basically हम बात करेंगे सबसे पहले discipline की. Discipline is something that is imbibed inside you, right? No rules and regulations जो आपके ऊपर लगाए गए होंगे आज तक, बचपन से लेके आज तक, that will not prove that आप disciplined हो. Discipline क्या होती है? जब कोई चीज आपको अंदर से करने का मन करे every day. अगर आप सुबह उठने वालों में से हो, तो you cannot be on bed after 5 or 6 or whatever your timings are. अगर आपको सुबह उठ के पानी पीना है,
तो वो अगर आपकी आदत बन जाए तो नथिंग लाइक इट, किसी डाइटिशियन के कहने पर या किसी के गुरु के कहने पर ये हो तो ये उसमें मजा नहीं आता जब तक वो आपकी अंदर से ना आवाज आए कि आपको ये चीज करनी है, राइट? तो डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच हैज टू बी इम्बाइब्ड इनसाइड यू एंड यू मस्ट फॉलो सम थिंग्स व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू, ओके? कोई आपके ऊपर नजर ना रखे, कोई स्पाई ना हो, एंड स्टिल यू डू इट, तब आती है एक्चुअल डिसिप्लिन। और फिटनेस और डिसिप्लिन का बहुत गहरा रिश्ता है, ये हम सब अग्री करेंगे, राइट? है ना? ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमने पहले भी अभी सुना फ्रॉम अ हेड मेंटर अबाउट consistency. Again, consistency and fitness is greatly related because we have to choose fitness every day. अगर आपने कोई आपको कोई क्रेविंग आई, फॉर एग्जाम्पल आज आपने लंच में छोले भटूरे बनाए हो और आपकी वो चीज बच जाती है, वो फूड बच जाता है, एंड यूड से कि चलो रात में यही कर लेते हैं क्योंकि हमें आसान करना है, लेकिन देन इट डजंट रिमेन अ चीट मील, इट बिकम्स अ चीट डे क्योंकि आपने ओवर एंड ओवर वो चीज रिपीट की। चीट मील लेना बिल्कुल अलाउड होता है, आप बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो अपने एक सिस्टम को, पर अगर आप रिपीट करते जाओगे तो फिर देन इट बिकम्स अ क्राइम फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, है ना? सो वी विल बी कंसिस्टेंट इन चूजिंग फिटनेस एवरी डे। लाइकवाइज कोई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो तो एवरी डे चूज करो उसको, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, डज नॉट मैटर। 10 मिनट में एक्चुअली आप वेट लूज नहीं करते हो ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन आपकी आदत बन जाती है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वो आपका दिमाग रिमाइंड कर रहा है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रिमाइंड कर रही है, नाउ यू हैव टू वर्क आउट, गेट अप नाहिदा एंड वर्क आउट, गेट अप राधा एंड वर्क आउट, you know that automatic thing in your mind is just prompting you कि ये चीज करनी है। थर्ड ऑफ ऑल, अगर आप कोई रजीम अपने हेड में चूज कर रहे हो कि मुझे ये चीज करनी है, then you are a loner inside your heart. Do not think or depend on your partners or your best friends or your neighbors कि आप मेरे साथ वॉक पे चलो, आप मेरे साथ जिम पे चलो, ये मत सोचना। अगर आपको लगेगा कि आपके जैसे अगर से बारिश ही आ जाती है, अभी मानसून चल रहे हैं, would you break your regime? Would you break your walk? No. If I'm giving you a task of doing 10,000 steps every day, you can also do it at home. You have all done march past in schools, right? We have all done it. तो हम वो घर पे भी कर सकते हैं ना? So इसी तरह हमें एवरी डे चूज करना है अकेले खुद के लिए कि हम कैसे ग्रो करेंगे फिटनेस की जर्नी में। We cannot depend on other people. Again, वेट लूज करना हो या वेट गेन करना हो, people think it's a task. डाइटिशियन के पास जाना is a task. किसी डाइट रेजिम में जाना is like a hard work. It is a job. पहले 2-3 दिन आपको लगेगा पता नहीं आप क्या कर रहे हो, you've done something out of blue moon, हम तो कंफर्टेबली खा रहे थे, लेकिन वेट लूज करना बहुत आसान है, सेम एज वेट गेन करना। यू जस्ट नीड अ कपल ऑफ थिंग्स एंड यू आर सॉर्टेड। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं हम अभी पैजेंट्री में? व्हाई डू यू थिंक? उर्वशी जी, वुड यू लाइक टू आंसर कि हम इतना फिटनेस 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 मैं रिपीट किए जा रही हूँ पिछले 5 मिनट से? साक्षी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं खुद एक योग और ध्यान गुरु हूँ। जी, आप बेहतर खुद योगा। हाँ, तो फिटनेस एक्चुअली इट इज नॉट ओनली फॉर आवर बॉडी, इट इज फॉर आवर इनर स्ट्रेंथ आल्सो, इनर माइंड। हम अपने शारीरिक रूप से ही इतना फिट होना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी मानसिक रूप से फिट होना है। तो फिटनेस हमको इनर एज वेल एज आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड दोनों तरह से बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। इसीलिए फिट होना बहुत जरूरी है। इट एक्चुअली इट डेवलप्स अ कॉन्फिडेंस एज वेल। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। डेवलप लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। So we are going to a pageantry जो एक बहुत it's a huge platform and a huge opportunity for all of us. आप यहाँ पे बहुत सारे verified and qualified लोगों से मिलोगे जहाँ पे आपको आपकी फील्ड, आपके जॉनर की एक्सपर्टीज से सीखने भी मिलेगा और सिखाने भी मिलेगा। तो ये इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अपने बेस्ट वर्जन में अपीयर हो जब भी आप हम सबसे रियल टाइम में भी मिलो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ शायद आपको अभी जो आपकी ट्रेनिंग जो टैलेंट राउंड्स होंगे उसमें इमीडिएटली काम ना आए, लेकिन ये लॉन्ग रन में जब आप एक्चुअली में हम सबसे मिलोगे तब ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा जब आपके बेस्ट वर्जन में होते हो, राइट?
So here goes the first thing that we all want to hear about is food. कि कैसे आप क्या खाओ, कितना खाओ कि आप weight lose कर सको. So anybody who's having a target to lose weight here, just wanted to check. Let me cross check. Nice. Okay. So basically we are not putting any standards out here. We're not giving any targets. Okay. Being say, having said this as a dietitian, शायद कुछ लोग agree नहीं करेंगे. लेकिन the target is not 60 kilos, 70 kilos or whatever your जो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अपने BMI में. The target is कि आप कब अपने body में comfortable होना feel करना शुरू कर दो, क्योंकि you are going to wear those dresses जो कि designers के through आएंगी, उनकी मेहनत के through आएंगी. It has to look the best on you. उसको justify करने के लिए और उसको confidently पेश करने के लिए आपका जो रैम्प होगा उस पे जब आप पहनकर चलो तो एक बार भी आपको यह ख्याल ना आए कि कोई फ्लैप तो नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा तो लूज तो नहीं हो रहा, यहाँ से लूज कर लिया होता वेट तो फिट अच्छी हो जाती, ये ना फील हो, है ना. तो इस वजह से आज से शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरह हम वेडिंग्स पे जाते हैं, बर्थडेज पे बच्चों के, वी जस्ट स्टार्ट गेटिंग आवरसेल्व्स रेडी कि अभी वेट लूज कर लेते हैं, बर्थडे आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, वैसे ही ये इवेंट आपकी है, आपकी खुद की. तो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंस हमें से देना चाहिए, सबसे ज्यादा, isn't it? So we will work on it. That has to be a promise. So if you want to lose weight, try to eat 400 to 500 calories less than your current जो भी आप खा रहे हो calories. Okay, try to eat less. और अगर आपको gain करना है आप में से किसी को तो 400 to 500 calories ज्यादा खाइए. इन दोनों cases में water intake को 3 to 4 liters रखिए और workout ना छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए. Or Ruchi, do you work out, by the way? Just curious to ask. Yes, ma'am. I used to work out, but from some time, like I'm not doing it. From likewise, like from a month, I'm not doing it. You know how I could judge? I don't know. You just stretched your neck. I believe you got a strain or something. Yes, ma'am. Actually, I'm having a strain. So let's start with you, Ruchi. हम एक challenge share करते हैं हर session में. Okay. Let me find you for sure because you have a strained neck and we need to cure that. And this goes to everybody, by the way. Thank you, Ruchi. You can mute yourself. So this challenge is everybody over here, and I'm seeing the names, all right? So don't try to fool me later. You all have to get into your best fitness attire, those celebrity fitness attires that you have seen, and get your shoes on and do some workout, anything that you love, anything that you indulge in, and take a video of yours, share it in your story, tag me and tag the organizers. Okay, we are going to track you from here until the finale. अगर आपने ये चीज discipline से कर ली, तो I can assure you will have a toned body. And मैं तो suggest करूंगी कि अगर आपके पास water bottles या weights हैं, कोई weight training करता है, तो वो please करें, क्योंकि this is going to really crack the nut. Okay? And last but not the least, water intake जो है आप जैसे मैंने कहा 3 to 4 liters रखें for sure. And sleep patterns को improve करो. अगर हम सब में से होता है ना कि हम सब कुछ काम सारे खत्म करके then we go to bed. That is okay, but अगर the sooner the better, because beauty sleep is not a myth. We need to get a beauty sleep on time, and this will bring in the natural glow. So आप try करना, अगर you are a coffee person or a tea person, 6 to 8 hours पहले आपका coffee खत्म हो जाना चाहिए so that it does not interfere with your sleep. 2 hours पहले आप अपने meals खत्म कर लो. And also likewise try to do the workouts in the morning. पहले तो workout challenge on है, मैं ये दोबारा remind कर दूं. I will see you all there on Instagram when you upload this. And last but not the least, do not take stress on the workout part. Okay, there are other stresses in the world you want to get stressed upon. Okay, but my suggestion, my good wishes are that you do not take stress for anything. वर्कआउट के लिए स्पेशली या कोई वेट लूज करने के लिए स्ट्रेस अगर लेते हो, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर गोइंग टू बी स्टक. स्केल के अगेन यू सी द स्केल नॉट चेंजिंग फॉर 3 days 4 days, डू नॉट टेक स्ट्रेस, बिकॉज इफ यू आर कंसिस्टेंट, एक दिन यू विल सी सडनली यू हैव लॉस्ट इंचेस, बट यू हैव टू मेजर योरसेल्फ एवरी वीक. यू हैव टू ट्रैक योर वर्कआउट एवरी डे कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है. ओके, सो दैट इज व्हाई आई केप्ट सेइंग थ्रू आउट दिस सेशन कि चूज फिटनेस एवरी डे. All right, that is all from my end, ladies.
I'm looking forward to see you more. And if you have any queries related to diet, ya kya khana hai, kya nahi khana hai, feel free to connect to me on Instagram. Here I end my session. All the very best. Glow in the talent round 1. And here I pass it on to Jaya. Thank you, Sakshi. And I think all of you have the Instagram handle of Forever Star India and the trainers also. So Sakshi Shekhar को आप definitely ढूंढ पाएंगे Instagram पे. So I always see Sakshi की stories कितनी interesting होती है, and everybody is there with their fitness attires. So I see this batch, ये batch के नाम मैंने भी अच्छे से note किए हुए हैं, and I want to see all of you today evening or tomorrow morning with this sessions on, the challenge on. So are we all clear with that? Double thumbs up, ladies. Thank you so much. So अब fitness हो गया, virtual presence हो गया है. Now let's come to the final thing, which is your ramp walk. I understand बहुत सारे लोग जो इसमें शो के बाद में मॉडल, एंटरप्रेन्योर्स, एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, they all want to walk that ramp. Right. So first step आपका जो ramp walk है, I think आप comfortable अब already हो गए हो, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था. So let's see your ramp walk. उससे पहले I want you to meet your ramp walk trainers who will guide you personally and will demonstrate for you. So over to you, Rupali, now. Good evening, all the beautiful ladies present here. How are you all? Excited? Yes? That's very nice. I can see such beautiful smiles. Okay, so my name is Rupali Jalota and I'm going to help you ace that ramp walk. Okay, so we'll be doing it today. We'll be learning it and we have to, we have to perfect it as well. Okay, so first thing first, we need to be comfortable in our heels. Okay, so I hope everyone is wearing heels. Yes? Yes or no? Everyone is wearing heels? That's great. If you don't, then please, I'll give you a minute. Go and quickly get it, okay, from where you've kept it and wear it. Put it on. So first thing first, we need to be comfortable in our heels because we'll be wearing 5 to 6 inches of heels. So we need to practice unless and until we are absolutely comfortable in those heels. Fine? Now, the place where you will be walking for your talent round 1, 2, and 3, you should make sure that you have enough space to walk. Okay, it shouldn't be that you just take 2 or 3 steps and you are done with that. No, you should have enough space to walk and your camera placement should be perfect. It shouldn't be too high, it shouldn't be too low. Okay, it should be at the level and you should be clearly visible. Now, some people blur their background. Please do not do that. Make sure that your backdrop is absolutely clutter-free. It's clean, neat, and tidy. There is no movement taking place behind you. People shouldn't be moving, okay, because that distracts your jury members. So you shouldn't be doing that. So please make sure there is no movement behind you and it is clutter-free, so that you don't have to blur your background, because when you blur your background, what happens is that when you go away from the camera, you're not visible. Okay, so don't do that. So it's a sort of, a very good suggestion that I'm giving you, and it needs to be, remembered all the time. Now, the 3 things that you need to work on. First of all, you have to work on your posture, because many of us, are all the time on our phones and tabs and laptops, and we have ruined our posture by either hunching, okay, and bending. So we need to make sure that we are sitting straight, and when we are walking, we are keeping our back straight and upright, okay? So we have to stand tall when we are posing in front of the audience. So I'll give you one exercise which you can do to improve your posture. Okay. Now, secondly, you have to be very confident. Make sure that even if you are nervous, even if you are a little anxious, which every one of us is at times because we are facing the camera. So we tend to get nervous at times, but make sure it is not visible on your face and through your body language. Okay. The jury members should not ever come to know that you're feeling jittery inside. Okay, so you have to be very confident all the time. And last but definitely not least, you have to wear your beautiful smile all the time. Okay, now you'll have to see in front of the mirror. You can stand and see
which intensity of smile suits your face, because not many people are comfortable with, a wide grin. So you'll have to see what suits your face, and that you can do in front of the camera. And you don't have to keep that fixed smile on your face. You can change your expression. Sometimes you can show your teeth. Sometimes you can smile without showing your teeth. So that will depend on you, okay? How beautifully you portray yourself and your features in front of the camera. But you have to smile. That you have to remember. Smiling is very, very, very important, okay? Because that makes you look beautiful, and that enhances your confidence as well. And your jury members get to know that you're a very beautiful and a very confident person on screen, okay? So these three things have to be kept in mind. And as far as your walking is concerned, you have to make sure that you're walking on a straight line, okay? We don't have to follow a zigzag pattern. We have to walk on a straight line. For that, you can paste the sellotape, any dark colored sellotape on floor, or if you have tiles, you can follow that marking that is there, that division that is there in between two tiles. You can follow that path, but make sure you're walking in a straight line. And when you're placing your feet, एक पैर के सामने दूसरा पैर रखेंगे, हम एकदम क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है. So you have to place your one foot in front of the other. Hand movements को बहुत कंट्रोल रखना है, हाथ बहुत ज्यादा sway नहीं करना है, ठीक है? हम मार्च पास नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने हैंड मूवमेंट्स को बहुत ही कंट्रोल रखना है. दैट ऑल्सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन मैनेज टू डू दैट. और उसके बाद आपको जब आप टर्न्स ले रहे हो, पोज कर रहे हो, तो थोड़ा होल्ड करिएगा पोज को. बहुत जल्दबाजी में हमने नहीं करना है, बहुत झटके के साथ हमें सारे काम नहीं करने हैं. ऑल योर एक्शन शुड बी वेरी सटल एंड एलिगेंट, और ऐसा लगना चाहिए कि आप म्यूजिक करेंगे, हाँ, आप अपना टैलेंट राउंड के लिए अपेयर होंगे तो म्यूजिक चल रहा होगा आपके पीछे, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप इंजॉय कर रहे हो अपना वॉक, ठीक है? आप म्यूजिक के साथ चल रहे हो, या कैचिंग एवरी बीट ऑफ दैट म्यूजिक. तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है. और जब आप कैमरा के पास आए तो आप ये देखें कि आपकी जो अपर बॉडी है वो विजिबल होनी चाहिए. आपका कैमरा प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी अपर बॉडी हमें दिखाई दे, ना कि आपके लेग्स. क्योंकि बहुत से लोग कैमरा प्लेसमेंट ऐसे कर देते हैं कि जब वो कैमरे के पास आते हैं तो उनके लेग्स विजिबल हो रहे होते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू सी द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ दैट कंटेस्टेंट. So make sure that your expressions and your face is clearly visible to all of us sitting here. उसके बाद मैं अभी आपको पहले तो posture के लिए एक एक्सरसाइज बताती हूँ. आप इसको देखिए. आप सोचो कि आपके पीछे एक वॉल है, यहाँ पे डोर है मेरे पास, इसलिए मैं ऐसे खड़ी हो रही हूँ. आपके लेग, आपके हिप्स, आपके शोल्डर ब्लेड और आपका हेड पूरे दीवार से लगे होने चाहिए. should be up against the wall like this. Okay? जब आप ऐसे 1 मिनट के लिए खड़े होगे, आपको 1 मिनट ये प्रैक्टिस करना है. फिर जब आप वॉल से अलग होगे, तब आप देखोगे कि आपका पोस्चर एकदम सही है. Yes? You should not be standing like this or bend like this. Your posture should be like this, straight, upright. Fine? Now, when you're walking, you have to make sure that you are moving this part of your body, okay? So for this, there is one exercise. You can do like this, so that this part of your body is flexible, smooth. The movement is smooth, okay? Because you have to move this portion when you're walking. So you have to focus on this area as well. Now, when you are posing, you have to place your hands, okay, on your waist. So make sure आप अपने हाथ ऊपर रखें, ना कि नीचे. अब आप फर्क बताइए मुझे, जब मैं यहाँ रख रही हूँ तो मेरे लेग्स लॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है? हम यही चाहते हैं, हम यही दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो लोअर पार्ट है वो लंबा है. जब हम ऐसे हाथ रखेंगे तो हमारा टॉर्सो लंबा दिखेगा, एंड वी डोंट वांट दैट, ओके? वी डोंट वांट आवर अपर बॉडी टू लुक लॉन्गर, वी वांट आवर लोअर बॉडी टू लुक लॉन्गर. सो वी प्लेस आवर हैंड्स हियर लाइक दिस. फिंगर्स के बीच में आप थोड़ा ऐसे गैप भी रख सकते हो. You can place your fingers like this gracefully. बहुत ऐसे झटके से और ऐसे नहीं करना है, subtle way में लेकर आएंगे, बहुत धीरे से, ठीक है? उसके बाद जब आप पोज कर रहे हैं तब आपको टी पोजीशन में खड़ा होना होता है. तो उसके लिए you can place your right leg like this at a 45-degree angle and your left leg like this facing the camera. Okay? सामने की तरफ फेस करेगा
ये 45 डिग्री एंगल पे होगा। जब आप ऐसे खड़े होगे तब आपकी बॉडी ऐसे टर्न हो जाएगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी ऐसे टर्न हो जाएगी, पर आपको इस तरफ नहीं देखना है। यू हैव टू ट्विस्ट योर टॉर्सो एंड फेस द कैमरा एंड स्टैंड स्मार्टली लाइक दिस, स्टैंड टॉल, ठीक है। मन में सोचिए कि आप लंबे हो गए हो, ऐसे सीधे खड़े होना है एकदम। अब अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो आप अपना लेफ्ट लेग पीछे रख के राइट लेग को सामने फेस करके भी खड़े हो सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। एंड यू कैन प्लेस योर हैंड्स लाइक दिस ऑन योर वेस्ट। आई एम सॉरी। Okay, so you have to place your hands like this and stand in this position. Okay, so this is the way. Now when you're walking, as I told you, you have to walk straight. So just give me a second. I'll place my camera. So we have a starting point. Okay, so suppose this is my starting point. This is the place from where I'm going to start my walk. So I'll enter. Okay, this will be my starting point. So I'll stand here, I'll pose, I'll smile, and then the leg that is in front. Okay, we have to remember this. जो leg हमारा सामने है, हमने उसी से walk करना शुरू करना है. Fine. We'll move. Now see my hand movements. I'm not moving my hands much. You have to be very elegant and you have to move your lower portion. Then you come close to the camera. You pose. 1, 2, 3, 4, 5. Hold on. Now poses is all your creativity. What all poses you want to, showcase, that's all up to you. But you have to hold on to your poses for 3 to 5 seconds. Change, turn, smile. Okay, smiling is very important. Now you go back. Now suppose if you have enough space, then you can stop in between. Again, pose. That is the midpoint. Again, go back. Moving your lower portion. See, this portion is moving. Okay. Then again, you come back to the starting point. Okay, you will not take a direct curve and leave. So you will come back to the point from where you started, and then from this point, you will exit. Okay, so I'll show you once again. And then you leave. Okay, so did you notice that all the time I had a nice smile on my face? So this is what you all have to do. So I hope everything is clear. So I'll ask each and every one of you to show me your walk. Yes? Okay, so whoever is ready with your heels, आप अपनी स्क्रीन से दूर जाके कहीं पे जहां से आपको वॉक स्टार्ट करना है, go to your starting point. जो भी मुझे ready लगेगा, I'll announce the name and they will get a chance to walk. Okay. All right. Let me see. I think Anamika Singh is getting ready. Anamika, you are the first contestant, so you can start. Shalza, what do you say about 2 people? Shall I take 2 people at once? Yes, you can. I will also be reviewing it. आप 2 को ले लो, Jaya. Okay, so first will be Anamika. Second, who is ready? Ladies, you all have to stand up. Do not sit now. All right. So I'll take Deepti and Anamika. I'm putting them on the spotlight. Perfect. So
please start. Both of you can start. Music is required. It's okay. Today, since all of you are not being told, so we can do without the music. Yes, Anamika. Anamika, camera placement, okay? Place your camera a little higher than, yes. Yes, like this. But now your legs are not visible, so you'll have to make the adjustments, okay? Deepti, a little more hip movement is required, okay? So practice. Practice in front of the mirror and record yourself, okay? Who else is ready? I think Vibhuti is ready, right? Vibhuti ji, you can start and Seema Dwivedi can start. Anamika, this is better. But you have to sway your hips a little more, okay? The camera placement is better now. Ma'am, should we start? Seema ji, you can start. Vibhuti, very nice. Just control your hand movement. Rest is perfect. I love your smile. सीमा जी आप आगे आ जाइए. दो बातें सीमा जी. एक तो जैसा कि आपको रूपाली ने कहा कि आपने हैंड्स जो है वेस्ट पे रखने हैं, ठीक है? तो हैंड्स को वेस्ट पे रखिए ग्रेसफुली, और जो आपकी स्माइल है आप इससे भी अंदर से ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, उसको बाहर भी आने दीजिए, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं और स्माइल करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है. एनर्जी लाइए थोड़ा सा वॉक में, अदरवाइज आप बहुत अच्छा वॉक करें. Okay, so I think next two will be Ruchi Gautam and Nahida. You both can start. Nahida, continue. I'm watching you. Yes, Ruchi, you need to be a little more confident, okay? Nervous हो रहे हो आप? नहीं, nervous नहीं होना है, ठीक है? You're so beautiful. Be confident. Practice, okay? All the best. Nahida, come close. Yeah, so Nahida, understand two things. Every time you have to pose in front position. आप साइड में मुड़के पोज कर रहे हैं, सिर्फ प्रोफाइल में पोज कर रहे हैं, ठीक है? जब भी आप खड़े होंगे प्रोफाइल आप दीजिए, पर आपने फ्रंटल पोज नहीं देना है. लेग्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए जब आप वॉक करते हैं. सो ट्राई टू वॉक विद वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर rather than walking with wide legs. Wide legs will not look graceful in spite of having a very good figure. Okay, so one thing that I want to tell everybody who's listening to me here is that ramp walk is all about grace. जो भी आपकी पर्सनालिटी है वो आपके वॉक के थ्रू ग्रेसफुली दिखनी चाहिए, अपीलिंगली दिखनी चाहिए. सो आप उसमें कैसे ग्रेस ऐड करते हैं, कैसे अपील ऐड करते हैं, ये रेसिपी आपकी है. आप उसमें स्माइल डालिए, आप उसमें नजाकत डालिए, आप उसमें एक्सप्रेशंस एंड पोजेस डालिए, बट ऑल दिस यू हैव टू डू एट योर एंड. ओके, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता जाए. Thank you. And next we have Namrita and Kanika Sandeep Yadav. Kanika, start.
कनिका स्टार्ट कीजिए कनिका. Yes, Namrata. Yes, Namrata. You're very beautiful. But make sure that when you're posing, don't bend your body back, okay? You're bending your body back, so don't do that. Thank you. Kanika, walk कीजिए. Kanika Sandeep Yadav, please start the walk. कनिका, बात सुनिए आप हमारी. Kanika, you're very beautiful. You're very pretty. भाग के मत जाइए. Pose करते, pose. Let everybody appreciate you. Okay, जैसे अभी आप smile कर रहे हैं. मैम उस तरीके का हाँ जी smile. मैम, यहाँ पे ना एक्चुअली स्पेस कम है क्योंकि मैंने पहले आपका मैसेज देखा नहीं था, तो मैं शॉप पे थी, तो मैं घर पे नहीं जा पाई, इसीलिए मैं यहीं पे ही कर रही हूँ. आपने फिर भी अटेंड किया, लेसन आप लर्न कर रहे हैं. हम इस बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं, हम ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सो यू डन अ गुड जॉब. ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जैसा अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, इस तरह आपने हंसना है. ठीक है, हैंड्स को जैसे रूपाली ने कहा वेस्ट पे आप रखेंगे तो और कुछ और नजाकत, बस ये चीज याद रखिए. जब आप स्टेज पे आए, ऑल द पीपल have your grace in you, feel beautiful from inside. वो बाहर खुद ब खुद. All the best. Thank you. Let's see from next two candidates. Radha ji can start, and the lady in blue, 7DG26B. Yes, you can also start, and Radha ji can start. Can I start my wrap up? Yes, you can. Okay, ma'am, I'm ready. 14 different styles. মানে কাচাকুচি পর একটি বিগ বাম্পার আপনার জামা কাপড় বানাচ্ছে। Yes, Radha, I like that turn that you took. मुझे बहुत अच्छा लगा. आप पूरे टाइम हंस रहे थे, वो भी बहुत अच्छा था. थोड़ा सा और ग्रेस लाइए, ठीक है? ऐसा लगा जैसे आप थोड़ा और जल्दीबाजी में हैं. Take your time, slow down, okay? Walk gracefully. Thank you. ओके, आप अपनी बॉडी को खींच के वॉक करेंगे. ओके, स्टैंड टॉल, टॉलर देन व्हाट योर हाइट इज. वो कैसे होता है? जब आप अपने वेस्ट से ऊपर वाला पूरा खींच के चलते, तन के चलते, राइट? एनर्जी लाइए उस पार्ट में, अदरवाइज आप अच्छा वॉक कर रहे हैं. Okay, so next candidate would be Renu Kumari is ready, and who else is ready? Veera can start. Renu and Veera, you both can start. Renu in yellow dress, you can start with your walk. Yes. सॉरी मैम, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे. अच्छा, ओके, थैंक्स.
Yes, Veera. आपका लेग मूवमेंट अच्छा है. जब आप पोज कर रहे हो तो थोड़ा होल्ड करो उसको, ठीक है? और थोड़ा और पॉलिशिंग की जरूरत है हमें, ठीक है? So I think that will come with practice. So keep practicing. Thank you. Thank you. Next to, I think we have Urvashi ji and Tripti Devangan. Tripti, you can also start, please. Yeah. Come forward, Tripti. Yes, So, ma'am. Tripti, you have a very beautiful smile. आप जब walk कर रहे थे, you were continuing that, so you have to continue doing it. लग रहा था. You have very good attitude for walking with little style. वो बहुत mandatory होता है ramp walk पे. Very good thing done. Just one thing, bring sort of changes in your pose. So जितनी बार आप pose करती हो, उतनी बार अगले poses, अलग-अलग poses दीजिए. Okay, and don't be in a hurry to go back. Hold your poses. Yeah. All the Thank best. you, ma'am. Yes, Urvashi ji. Am I audible? Yeah. Yes, Yeah, you are Urvashi. audible. Yeah. उर्वशी, आप जब पोज करेंगे तो बेंड नहीं जी। करेंगे अपनी बॉडी पीछे, ठीक है? Okay. थोड़ा और ग्रेस लाएंगे. और जब आप पोज कर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी राइट या लेफ्ट में बेंड हो रही है, तो वो आप कोशिश जी। करो वैसा ना हो. यू आर फेसिंग द Okay, कैमरा, ठीक है? Okay. थैंक यू. Fine. Thank you so much. Thank you. Who else is ready? Please raise your hand. I think we are done with everybody then. Snehal is ready. Okay. Snehal and Ankita Tripathi, you both can start. Your walk is nice. बहुत energetic है आपकी walk. Energy के साथ आपने walk किया. My only suggestion to you is कि आप थोड़ा hold कीजिए poses को. जब आप pose करते हो, posing में variation लाना है. अभी आपने one arm fold pose किया था. So instead of that, और भी आप poses कीजिए. And hold eye contact with the camera. क्योंकि जब आप कैमरा के साथ eye contact करते हैं, जब आप pose करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप हमारे साथ connect हो रहे हैं. Because it's a virtual platform. Okay, ma'am. You must do that. Keep doing good work and add more poses. Okay, ma'am. Yes, Snehal. Snehal, we need to work very hard, okay? We need to work very hard, and I think you also know that. So बस मेहनत करनी है, and nothing is impossible. हम achieve कर सकते हैं कुछ भी हम चाहें. तो बस थोड़ी और मेहनत करनी है हमें, and next time I want to see you shining like a star. All the best. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Do we have anybody else who has not walked? Okay, I think everybody has done that. So thank you so much, ladies. There are some final words by your trainers today.
I would request each one of you to come on the screen and give them any idea about their talent round 1 and the upcoming journey. Over to you, Shelza. Yeah, sure. So what I want to talk to all of you once again is, जैसे शुरुआत में जया जी ने आपको बताया कि किस तरह आपने हैंडल करना है आपका टैलेंट राउंड 1, right? So I want to ask you and clarify you. तो जैसे टैलेंट राउंड 1 होगा तो आपके नाम अनाउंस किए जाते हैं, जैसे कि so and so 1 2 3, जैसे कि अभी मैं बोलूंगी उर्वशी जी, राधा, विभूति जी, रेणु जी एंड स्नेहल. अगर हमने आपके 5 के नाम बोले हैं और जया जी ने कहा है कि अब आप रेडी रहेंगे, इसका मतलब है कि इसके बाद आपको रेडी होने का टाइम नहीं मिलेगा. रेडी होने का टाइम मतलब आपका स्क्रीन चेक करना, आपका पोजीशन लेना, ओके, आपका परफॉर्मेंस किस तरह करना है, मेंटल नोट लेना. यू विल नॉट गेट टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ही नाम लिया है स्टार्ट पॉइंट पे वेट करिए, और जैसे ही आपका नाम लिया आप स्टार्ट कीजिए. आपने जो भी जैसे भी आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने टैलेंट पहले दिखाना है या आपने अपना इंट्रो पहले बोलना है, व्हाट एवर इट मे बी, तो वो आपका मेंटल नोट रेडी होना चाहिए. नॉट दैट कि आपको जब बोले फिर आप उठेंगे फिर आप करेंगे, बिकॉज दैट इज अ परफॉर्मेंस राउंड. इट्स नॉट अ राउंड आप बाकी अपना हो जाने के बाद बैठ के सारे अप्रिशिएट कीजिए राउंड्स, बट टिल द टाइम इट्स नॉट योर टर्न. The moment your name is called, you have to take the start point. Wait there. And again, as she says your name, you have to start the performance. Please, जो आपको time minute दिया हुआ है, उसी के अंदर आपने finish करना है, अगर आप चाहते हैं आपकी marking अच्छी. Secondly, जैसा उन्होंने आपको कहा कि हम सुन चुके हैं आपके आइडल के बारे में, तो आइडल के achievements, आइडल के qualities आप सामने नहीं लाएंगे, आप अपने बारे में बोलें. आप उनसे क्यों इंस्पायर हुए, आपने उनसे क्या सीखा, द रीजन, एंड उसको बहुत अच्छे से अपने टैलेंट राउंड में दर्शाइए. शो इट ऑफ नाइसली थ्रू द एक्ट. उनका कॉस्ट्यूम, मतलब हमको आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ, वी शुड बी एबल टू गेस कि आपकी इंस्पिरेशन कौन, फ्रॉम हाउ यू हैव ड्रेस्ड योरसेल्फ, बिकॉज उसकी भी मार्किंग. You can't come in normal clothes and then speak about your inspiration and then do a talent round. Your talent round is dedicated to your idol. You better dress like one. आपको देखते हैं हमको लगना चाहिए कि oh, माधुरी दीक्षित is your idol. Oh, Sushmita Sen is your idol. You should have something like her in you for us to guess your idol. Am I clear? Any questions? Any questions? Because that day we will not be able to clear any of your questions. I'm so sorry. So if you have any doubts, I would request you. I don't think anyone has any questions. So all the best. It's your first round. Do well. Give your best. Shelza, I think Ruchi has a question she wants to ask. Ruchi, पूछिए. Yes, of course. Yes, ma'am. I want to ask that, is there any other training session also before the talent round? No, there are no training sessions. That is why this was a very detailed session that we did. You know, I hope you felt that it was a detailed session we did. Yes, ma'am. So now, so now that is why we are reiterating it to you again and again as to how you have to perform for the talent round, so that we don't want anyone to get confused about anything at all. Okay, so this is the training session you are getting, and after that, this is your performance round now. So we will be at the back seat. You are going to be at the forefront, showing us what you have imbibed from today. Yes, Nandita. Thank you. Ma'am, as you said that you will be asking 5 of the contestants to get ready. Yes. So I just want to tell you, even we have to go for the background music. So how we are gonna is there will be any time gap in between for a minute, or it will be on a continuous process? No. Of course, the time gap is automated. No, अगर आप 5 लोगों का नाम बुलाया है, तो जब तक first वाला perform कर रहा है, that is your buying time. और जिस order में आपको नाम दिया है, उसी order में आपको perform करना है. So if you are second in order, you should know that as the first contestant ends, it's your turn to start. So in the name of calling, in the order of calling out of the name, your positioning is going to be. So someone will get a minute plus, someone will get 2 minutes, someone will get 3 minutes, 4 minutes, and hence. Am I clear? Okay. Am I clear to all? All right.
Thank you. And is there anything which Rupali would like to say? Because ramp walk is going to be there in all 3 talent rounds. Okay, ladies. So my suggestion is keep practicing. Okay, so be friends with your heels and keep practicing unless and until you're completely comfortable in them. Okay, so that's my only suggestion. And please place your cameras, okay, where you're completely visible. So you need to work on that as well. You have to find a place where you can place your camera and it's stationary and it covers your entire body. Okay, so do all these things at home and keep practicing and keep tagging all of us and keep posting your videos and reels. We'll be looking forward for them. Thank you so much and all the best. Thank you, Rupali. Is there anything which Sakshi would like to share? Yes, to add to all of this, limit your time to 1 minute and finish it off. Otherwise, there are negative markings. So please take care of it and learn your introduction that I keep repeating, because coming on the screen, talking in 2 languages or just switching languages does not look professional. So you lose marks on all of it. So we are dropping a lot of hints out here to, get a 10 out of 10. So all the best, ladies, and looking forward to see you in the talent round 1. Thank you. And thank you to the trainers. Now I would like, take a leave from all of you. I would like to give them the best of my tips so that they can, come in the talent round 1, 2, and 3. Thank you, ladies, for being here. And to all of you, any support video for the reference? Yes, there are a lot of talent rounds. Recently, there was a talent round happened yesterday. It was around 3 o'clock for Mrs. India Batch B. You can, for the reference, you can go through that session because they have done really impressive work. Everybody was on time and सबके framework काफी अच्छे थे, and definitely you can hear the review तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको चीजें नहीं करनी है. So that's the most beneficial part of the later sessions कि आप पहले वालों से सीख सकते हो. So all the very best. YouTube पे जाइए Forever Star India के and go through all the live sessions recently happened. There was Mrs. India Batch B. You can search for that. Thank you so much, ladies, and